Hey guys, welcome back to my channel. So guys, thank you for joining with me and guys ये मैं एक lip balm review series start कर रही हूँ जिसमें I'll be reviewing individually one lip balm at a time in every of my video and there would be 10 lip balms in all, so you can expect me to deliver 10 videos after which जिनमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल रिव्यू शेयर करूंगी उन lip balms का, after which I will be coming up with a video wherein I'll be sharing my top 5 lip balms from them. आपको क्या करना होगा, आपको guess करना होगा after watching all of my 10 videos कि इनमें से review के accordingly मेरा top 5 lip balms कौन से होंगे and then उन top 5 lip balms का I'll be doing a giveaway. So yes, stay connected with me, do watch all the videos. Yes, without further ado, let's get started to today's lip balm review. So guys, आज का मेरा जो लिप बाम का रिव्यू है वो है ऑफ दिस बायोटीक का लिप वाइटनिंग लिप बाम एंड ये इस तरीके की पैकेजिंग में आया है, इस तरीके की पैकेजिंग में आया था ये एंड दिस इज हाउ इट इज. मैंने देखो इतना यूज कर लिया है. सो यस, इस तरीके से है ये. बहुत ही माइल्ड टिंट देता है ये आपको, एक बहुत ही माइल्ड टिंट देता है ये. देखो माइल्ड पिंकिश टिंट देता है. इट्स रियली नाइस. द fragrance is like too good. Also the MRP of this lip balm is 175 rupees. The MRP है, I got it on discount for like 149 or 150. I am going to post the link in the description box below. Also इसने जो क्लेम करा है, it's a biofood whitening lip balm, lightens and evens out lip tones. So yes, it's a whitening lip balm. I have tried it almost. आप देख सकते हो 1/3 खत्म हो गई है. तो yes, after using it for quite a long time, for like 15-20 days, my review on this would be that it definitely helps in lightening, no doubt. The only thing is what I did was I used it 3 to 4 times in a day. Yes, I used it 3 to 4 times in a day and उसके बाद ही I could see some minor difference. So जो ये claim करता है कि ये lip whitening और pigmentation को remove करता है, yes, gently it does that. अगर आप इसको once in a day करते हो और that too at night or something, then I don't know कि कितना ज्यादा ये pigmentation पे help करेगा, but 3 to 4 times in a day करने पे it helped. So yes. ऑल्सो ये थोड़ा टिंटेड है तो आई यूज्ड इट ऑल बाय माई सेल्फ. मैं इसमें लिपस्टिक नहीं लगा दी थी क्योंकि ये जेंटली टिंटेड है एंड येस, द फ्रेग्रेंस इज टू गुड. इट्स सुप्रीमली हाइड्रेटिंग, तो बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग है विच इज अ प्लस. आई रियली लाइक्ड इट. बट येस, इसका हाइड्रेशन 4 to 5 आवर्स रहता है. वैसे रात को आप इसको डेफिनेटली फॉर श्योर यूज करो ही करो बिकॉज आई थिंक ओवरनाइट ही हमारी सबसे ज्यादा रिकवरी होती है. सो येस, रात को आप डेफिनेटली यूज करो एंड देन मॉर्निंग में भी आप लिपस्टिक के नीचे कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू डू इट अंडर अ लिपस्टिक बिकॉज लिपस्टिक का ये पिगमेंट को ऑल्टर कर सकता है बिकॉज इट्स ऑल्सो स्लाइटली टिंटेड, इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट. So yes, as for the cost and everything and the quantity, it's quite good. I really liked it. I am going to definitely purchase it again because it's extremely hydrating. So yeah, it's a go ahead for me. I really liked it. And also how it looks on the lips, I'm going to post it just after this review. So yes, you can see how it looks exactly when it's applied on the lips. So yes, I really liked it. Also guys, if you like this my makeup look, I'm going to post the link in the description box below because ये एक zodiac sign series का makeup look tutorial था which I posted for the sign biases. So yes, I'm going to post the link below. If you really like it, you can have a tutorial for it. I'm so thank you for watching this review. Hope this review helps and stay tuned for videos on lip balms. I'm going to post them, quite frequently now. So yeah, just stay tuned with me. Also, there would be a giveaway. So yes.